here is that the game which is being decided is to be decided in consultation with the physical education teacher as well, so that he knows that what are the hazards which have to be taken care of, and also the rules which could be framed which do not dilute the spirit of sportsman spirit in the game. So that is why the commissioner Saab has had asked that you must include even the physical education teachers, because if it is integration of the subject, it is not only the subject which is important, but also the physical education part which is also important, keeping in view the fitness program. Right. So here, yeah. You're continuing, Sujit? नहीं आप कीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर नहीं, I think you have a better. Yeah. So इसमें the example here we have taken was साथी हाथ बढ़ाना, which is basically कि बच्चे को बच्चे they can actually make chains actually. So we have hula hoop at the center, and there are a set of bean bags or soft objects or even paper balls also. So the idea is that you move from your end. So children are standing, let's say, 10 meters apart from the central point, which is a hula hoop with the bean bags. So one person comes, picks up the with a whistle, he runs, picks up the one of the bean bag, goes back to his den. Then another person joins him. And then the chain actually keeps increasing. You come, you pick up one bin bag, go back. So it's a lot of running actually. It's very exhausting, and it's actually very interesting also, because after some time the chain becomes very long. So then the strategy is whether the first person goes back every time, otherwise he'll get tired, or the last person goes and this thing. So you actually have a very interesting strategy game also. And if the chain is broken, then the team has to start again. So it's actually, they're reciting the poem, they are actually playing it. It's a lot of fun actually on the ground when you're doing chain, the game called chain. So this is something that we have done. We will, yeah. So let's do one thing, just to give you a perspective here. What you need to do, that every chapter basically has a different learning outcome. Concepts have different concepts also have learning outcome and activities. So let us look at some of the activities and then we this thing. The process is very simple. You have to go to this portal, log in with your username and password, look at the chapters and the concepts, and then we can actually discuss on what kind of ideas. So we will create some ideas now, and then so that you can try it out yourself, and then you upload those ideas. So this is a link. You have to go to this particular link. So let's go there. So here in this link, I've actually logged in. So I will log out and log in as myself. One second. Yeah. So all the class 6, 7, 8 books are there. So what you need to do is to so when I'm doing, let's say, we'll start with social science. Let's take some examples. So when I click on any subject, so let's say in English, I click here. So it has different, so these are different chapters which are there. I can actually click on a chapter, let's say the friendly mongoose. And here I can actually see what are the things which are, what are the different concepts. So this friendly mongoose was basically a story where the mongoose is actually there at home, and the mother actually has stepped out, and so the mongoose is also part of the family. But she always suspects that mongoose is not good or whatever. So once she had stepped out, when she was back at home, she saw a dead snake out here. She saw blood outside. So she thought that it is a mongoose which has actually killed the child. So she kills the mongoose, and when she actually comes inside, she sees that it is not the child, but it is a snake which has got killed. So it is basically, it's a story like think before you leap.
or you should not judge a person by its cover. So that's a kind of story which is there. So can we do this in terms of a poem, in terms of a game outside? Or let's look at some examples also. So we'll take some examples out here. So let's look at some real examples. So what I'll do is I'll start with geography, and we'll go start from social science and then get into other subjects. So this is the example that we have taken morning, and we also discussed, so which is about the solar system. That can I create a game around Earth in the solar system? Then let's take this example. The second one is about longitude and latitude. So this is all drawing board that you can actually see. This is all about ideas which we are jotting down in a PowerPoint. And this is how you should do it. So what is the concept out here? The concept out here is basically, so you have longitudes and latitudes. The latitudes are all temperate zones. So latitude is you're moving from here to here. In terms of longitude, you're moving from left to the right. So these are the longitudes. These are the longitudes and these are the latitudes. So latitude means that near the equator, it is quite hot. And when you go away, it is cold. And in case of longitudes, you actually have time. So you have the time zones, right? So the sun is actually moving in a particular direction, right? And the other concept is the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The sun actually stays within this line always. And then you have the concept of this thing. So what kind of game can you play? So let's look at it. So what did we do? So we basically can play the game in two different forms. So we thought that let's do one thing. Let's create a game of kabaddi, where this in one situation, this is a line. This is a separation line. So in one round, where a player actually is moving from here to the other side and back. Okay, depending on this thing, you can actually have the number of points also. And in the other case, you actually can play it from this side to this side. So let's see what is the kind of game that we created. So I'm just going there. Social science, longitude and latitude. This is the concept of latitude, concept of heat zone, and the standard time. So let's see what is it that we created. We created a game called Around the World to understand about longitude and latitude and the heat zones and the relationship between time and longitude. So we said that we'll create a globe, divide a class into two teams. Depending on the number of players, you can increase the number of points where they can stand. 0, 0, 30, 60, 90, or 0, 15, 30, up to 90, or intervals of 10. So one, they learn about the multiples also. Second, so it can be done in two rounds. In round one, it is northern hemisphere versus southern hemisphere. In round two, it could be east time zone versus the west time zone. So in round one, when you have northern hemisphere versus southern hemisphere, we say that you have two teams standing face to face, like in case of kabaddi. Group A stand on the longitude points indicated in the diagram 30, 60, and 90 on one of the players. So 30, 60, and 90, you have players, 5 players. And here also there are 5 players. So one of the player of group B comes to the center. Okay, so he represents the sun. So the sun can actually move from this point to this point, from Cancer and Capricorn. That's the rule. So the sun doesn't move beyond that. So the sun must stay between the equator and the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn without getting caught by the players of the other team. If he is dragged behind the Tropic of Cancer or Capricorn, then you lose the point. But if the sun touches any of the player, then his team gets a latitude score of the player. So whosoever is the player, whatever is his number, so the other team actually gets that score.
30, 60, 90. If a sun is caught by the other team gets a latitude score of the sun. So that way he actually plays, and this you play for a fixed duration of 15 to 20 minutes. Now you change the rule from east time zone to the west time zone. So here the players are actually on like this. They are on north or south, 60, 30, 40, and this thing. So here, the sun can move from prime meridian to the extreme right and extreme left. So this is a prime meridian. Here, the sun can move from left to right completely. In this stage, the sun can actually move from left to the right. That is allowed. Okay. So if the sun is caught by this thing, the other team gets a meridian value of the time zone of the sun, whichever point that he was in. So that way you actually get to understand about what is prime meridian. You understand about the time zones. You understand about longitude, latitude, and plus you play the game of kabaddi in two different formats. So so these are the concepts that can actually be explained, and plus also the rules of kabaddi can be this thing. So it's you understand the rule of kabaddi, you also understand the variations. Okay. Now let's take another example, which was the motion of Earth. Let's look at it. Motion of Earth. We have taken this as another example. So what are the concepts here? The concepts here are rotation and revolution and the sense of collective belonging. So the teachers can actually work on the second concept, like the rotation and revolution. We got a very beautiful this thing. The idea was that how do you make someone understand about revolution and some of the concepts about orbital plane, axis, rotation, equinox, and all that collaboratively. So one activity that we picked up. So if you want to add activities, just simply click here. You can keep adding activity. So here, this is an activity. What is the activity? Rotation and revolution. So what we did was this. See, you have the game of baseball. People know about baseball, but they don't know what are the basic rules of a baseball. They don't know about. It's a very aspirational. It's a very aspirational sport, but it is something that no one actually knows so much about. So here, this was such a beautiful concept. One of the subject matter experts, she actually said, you actually have 4 points from batsman, the first builder, the bowler's umpire, the deep fielder, and the fourth post, this thing. So these are the 4 points. This is the starting point, otherwise there are 4 points. It is exactly the way we would basically move around this thing. So there are 4 positions. One is equinox. We call one as equinox. The second one is summer solstice. Third one is equinox. Fourth is a winter solstice. So these are the different positions which are there. So we instead of this position called first post fielder, they will know that in baseball this is what it is. Then you play a game of baseball, and you also understand how you actually are moving from equinox to summer solstice to equinox to winter solstice. This one is the hottest day of the year. So they also understand this is the hottest day, this is the coldest day, and they in the northern hemisphere. So that is what they will understand. These two in the southern hemisphere. So the game that we created. So let's look at it. Here we created a game of baseball played between 2 teams, each of 9 players. The game lasts for 9 innings, which each team alternating between batting and fielding. Cricket ki tarah hi hai. The score at the end of the innings are added to a cumulative score, and the team with most points wins. So go ahead. So here, what we are saying is that you have 4 points. First folder position is equinox, summer solstice.
then equinox and winter solstice. And so here you basically play the rules of this thing. In the center of the infield is a pitching mold where the pitcher stands and throws the ball. So हमने देखा उसको where the bowler is actually bowling. And the batter stands at the home plate. The batter must touch all points before successfully scoring a run. एक revolution के लिए you have to actually successfully do everything. Here in this game, a player can stop at any base because they might not make it to the next base. So इसीलिए वो एक जगह पे रहेंगे. So when they are standing on one place, they can keep rotating around that axis till another batter comes to their base. So here, so we can teach revolution, we can teach rotation. So each completion represents a revolution of the earth in an anti-clockwise way. And then from a sports point of view, we are saying that how they should, what kind of things they should be wearing. Like one of the sirs talked about कि tennis ball नहीं होना चाहिए. So similarly here, there are certain basic precautions in terms of having some sort of gloves and some helmet for protection. So, so when you are actually making all the 4 bases is when you actually make you get a score. So broadly, then we can actually get into some basic rules, and but you basically do very simple rules in terms of strikeout. Basically, batsman missing 3 balls 3 times, then he's forced out. So these are very baseball specific, but you can actually don't have it that way. Very simple rule like cricket. The only thing is that if you know that you cannot complete the entire thing, you stand at one of those bases. Cricket में भी ऐसे होता है. Either you can score 2 runs, or if you get only 1 run or 3 runs, you are always on the other end. Okay, so so this is a game simple to play. You also know the rotation, you know all the different positions. It's actually fun to do all that. Along with that, you can actually do a lot of it. Then we thought about maps. How can we actually do it with maps? A simple Surya Namaskar that you do in yoga, can we actually use that as a reference point for directions? Morning drill facing the sun, can we actually do that? Along with that, we can also do reference points in terms of with what time of the day you do Surya Namaskar or whatever, so you can actually change the year. So with this, we can actually do, we can actually look at the, I hope I'm audible. Yeah, with the sun facing, with the morning drill. So this was an example. Now let's take a difficult example like major domains of Earth, about lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. These are basically about, and also the major domains in terms of the what are the 7 major continents and the 7 oceans. Continent और ocean से हमें वो बचपन में हम खेलते थे. Crocodile or monkey का जो story है. So the idea is that the monkey has to move from the land to the other land without getting caught by the crocodile. So you can basically have squares or whatever on the ground just to represent different. These are different landforms, the continents, and then you have water everywhere. So one team can be crocodiles on water. The other team could be monkeys. The monkeys has to cross the river to go to the other side. So if they get caught by the crocodile, then they're out. So this game is basically a simple game of chore police. Yeah, simple monkey and crocodile, whatever, chasing and fleeing, whatever you want to call it. So this is a game of that. You can actually that, and since all of them, so if I get a chit, I go to the other side, I get a chit that I have to go to Africa, or I have to, from here I have to go to Australia. I'll have to jump between landforms to go to the other side, so I can get caught anywhere. So that's a kind of this thing. This is like similar Pac-Man kind of game, right? So you have, so you can call it Pac-Man, you can call it whatever you want to do. So you always have some good elements, you have some bad elements. The bad elements are always chasing the good ones, and so whatever. So it can be like a Pac-Man also. Yeah. Then major landforms of Earth. So you can basically have types of mountains, and yeah. So let's say in class 7th,
Again, we have another major landforms of Earth where it is basically about rock structure, magna, metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rock. Can we actually have teams where so there are more children here, which is like a igneous crust. So the concept is very simple. As you have some igneous crust, once so the it gets crushed to become sedimentary, and then because of heat, it becomes metamorphic. And more heat, it becomes magna. When the magna is out, when it is too much of heat, after that, it again becomes igneous crust. So this concept of density or the packing increasing and the heat increasing, this is what normally happens जब हम करते हैं. So we could actually have a PE game where there are children standing out there with one leg. They are running onto this one, and when they move to the next one, they answer a question and they move to the next one. They need to pick up a partner. It becomes two-legged race. When they go to the next round, then they pick up another partner to become three-legged race. Then it becomes a four-legged race. So here, as the number of children go up and as they become more and more tightly packed, then the heat actually goes up, right? So when you are inside magna, that's when you are allowed to untie yourself and come out of it. So it's like a full circuit: igneous to sediment to metamorphic to magna to back to igneous crust. So that's a full cycle in terms of the major life forms. Yeah. So solidification because of heat and pressure. So इस तरीके से, so then there are then you can actually have things like environment, human environment, where you're looking at transport systems. Okay, you have permanent settlements, you have temporary settlements, villages hai, cities hai. So people living in villages may have kacha road and this thing, metallic road. And in city you have metallic road in this thing, and people from far off places, if they have to fly from Ladakh to Kanyakumari, have to take a airway. So we can then have a different, like we actually did the arrangement in this case. The entire field basically can have marked as cities, city names, village names. So whatever chit I get, I need to use a transport. What kind of transport do I use? So if I have to go from one village to another village, I can actually gallop like a horse, like a horse actually keeps galloping. So I can actually gallop like a horse, or I can be like an elephant. So this is like an elephant. I can actually go on elephant from one end to the other. So or if I have to go from a long distance, I can actually fly like a bird also, fly like an airplane. So here I'm flying. So these are all games which will happen. You have 50, 60, 70 children on the ground. Someone is taking a plane, someone is actually using a horse, someone is, depending on chip that you get, the children and the teams will go from one village to the another. Either as elephant, so you have elephant walk, bear walk, crocodile walk, flying like a bird, doing like a butterfly. So you can actually do very interesting formations. So it is basically about moving from one settlement to the another settlement. So इस तरीके से इस तरीके से we can actually do different variations. So I'm not giving more ideas, but just to give you a sense. This is a game called in history when people rebel. So we talked about it. So can we have one team as a British team, the other one as an Indian team? So the British team basically can actually form their own rules, whereas the Indian team have to follow those rules, and the Britishers can also have rules which is actually affecting the performance of the Indian team. So round one, you can have team A as British and team B as India. In round two, you can have it the opposite way. Similarly, civilizing the native, again, education. So this story is basically about whosoever is a ruling party actually makes the game. So in Britishers were the ruling party, and they actually did all the games. This is very similar to this, with some slightly change in rule. So you can play any game. You can pick up any game, and team British
can actually create their own rules. Civics ki case, similarly, in case of civics, you can give like key elements of democratic government. You can actually have case studies of sports, and sports basically has a lot of things where it is about equality, about people from different backgrounds, different regions actually doing well, and sports actually mostly follows a very democratic and fair process for selection of players. Otherwise, you would have not had someone like a Dhoni actually becoming Indian captain. So you can actually have case studies also. Then this is an example where, so the chapter is basically about making of regional culture. So here we can basically use dance as a method uh, for integrating social science with sports. Because dance is also part of physical activity, and you can actually, so there is those who cannot do dance can actually write about, create paintings, write about the dance form, the evolution, and how it improves fitness, all of that. Okay. Then what, where, how, and then. It's a class 6 history where, so here we can actually pick up any timeline of a particular sport. So let's say football, and we can actually trace it back from 776 BC up to now in terms of. And here, what we can do as an interesting as part of this thing is that the teacher or student can actually look at the old rules of a particular period. So let's say, how was the game played in 776 BC or first century or second century, and we can actually play the game. It's the same game. It's like instead of going, so when we go to a Dholavera or Mohenjo-daro, we get to understand the history of that place. Similarly, if we actually take any of the popular sport like the football or whatever, we can football, the rules have changed so much over a period of time. It will be very interesting to actually play the sports of with the rules of a particular period of time. It's similarly to COVID-19. The moment we had COVID-19, everyone now is also studied about Spanish flu. It was about 102 years ago, but we have started studying about Spanish flu and how everything is exactly the same. So similarly, when we are actually looking at in the context of historical event, we can actually juxtapose the football evolution of football, keeping that in mind. On the train of the earlier people, so here one of the concept was basically about using local resources. So we can actually we have a game where children have to perform certain activities, and they have to use whatever are the locally available resources at that point of time. So we can actually, whether it is a ball, whether it is a bottles, whether it is just simple sticks, chalk powder, rope, it could be anything. So we can actually, or tire or whatever. So then there's something about gathering to growing foods. So we can actually have outdoor education. The teams can be given tasks to quickly collect leaves and flowers from in and around the school. And if someone gets the correct one within the shortest time, they get a particular point. If they don't get it, they have to do a particular this thing. Similarly, in the earlier cities, you can actually play any of those games, whether it is Pittu or something with bow and arrow or discus, javelin. So all these were things which are from Indian sports, which are from that time. Let's look at English from social science. So some examples that we're doing. So there's a chapter called A Tale of Two Birds. So उसमें actually the key concepts are trees, ashram, rishi. So here, so the game that we can actually think about, one game, I mean, of course, with your this thing, we'll think about more here. So where you have a set of, so you have a robber on one side, and you have the birds which are coming out of the nest, two birds.
The robber tries to touch the birds. Who are the saints? If the robber touches a bird, the child is frozen. The first robber will freeze and the second one becomes a robber. The first one becomes a saint. So, and the robber will ask question, thunder is associated with what words? If he can answer, then he gets unfrozen. So basically, you can actually have present tense, past tense, opposites, qualities of rishis, robbers, all those things can be actually given to this thing in terms of question. And the saints have to rescue the frozen robber. So here the basic concept is you have on one side you have robber, the other side you have the saints. And you also are telling them the concept of touch, freeze, unfreeze, fortunate, unfortunate, all that. I mean, everything that you have to use in this thing. The friendly mongoose, again, then one example is a different kind of school. Here you actually are playing a game to fetch in a blindfolded fashion, and both in blindfolded fashion and normally to understand the concept. So the class is divided into two. One player will be blindfolded, other one will give instruction to the blind player. So listen to the teammates and instruction to be able to retrieve more balls than the other one. So this thing is about retrieving the balls or doing any activity. So one is a blindfolded person, the other one is someone who actually guides you. So that way you get to appreciate the sense of listening, the sense of actually understanding and doing things. The other person also becomes more sensitive to differently able people. And this is how you can actually play the game on the ground. It's a very beautiful thing. It's about the values. It's about support for each other, respect. There's a lot of things you actually are doing through this particular thing. Then take an example of, we talked about it, Sathi Hath Badhana. Then it could be a lesson around Kathputli, which is basically about, so here, this is a simple game. There are 100 ways of actually doing Kathput. So on the whistle, the student will start jumping on one leg and they'll pass the turn to the next teammate who will freeze. So here, when you touch and this thing, you say Kathputli Ajad, and the puppet becomes free. So you have to do it by jumping only on one box. The student of whichever team reaches the finish line first will be the winner. So that is how it will be. Then there's an example of a game of rugby. So Bus Ki Yatra is a story. I'm just, these are all EA. So Bus Ki Yatra is basically about a story. So let's pick up Bus Ki Yatra. This is which class? Class 8th. Bus Ki Yatra is basically about a particular, it's about a set of passengers who are going on a bus, and the bus is actually broken. So it's basically about the bus driver and conductor not respectful about the passengers, and in a similar way, the passengers are also, they know that the bus is not good, but they still continue going in that bus. So it's basically about saying that both are, I would say, from integrity point of view, are not doing the right thing. Neither the तो विद्यार्थी को भ्रष्टाचार की स्वरूप की परीक्षा कराना, विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण विचारधारा से ये करना, ये basically this is what भ्रष्टाचार की कटाक्ष is ये है इसको हम कैसे करेंगे? इसको एक गेम ऑफ रग्बी के थ्रू करेंगे. गेम ऑफ रग्बी के थ्रू कैसे करेंगे हम डिस्कस करते हैं कि वो एक बेसिक रूल हम समझाते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं इसको. एक बेसिक रूल ऑफ रग्बी के थ्रू कैसे करा सकते हैं कि हम इस चीज को सिखा रहे हैं.
इसमें सिखा रहे हैं कि why people do not give respect and how respect is to be earned. इसमें हम 2 टीम्स करते हैं स्मॉल साइज का, इसमें टीम्स की अपनी कैप्टन होगा और टीम से एक स्ट्रैटेजी ब्रेक ले सकते हैं बीच में। और कैप्टन जो है, तो जब गेम कैसे स्टार्ट होता है, टीचर उसको रग्बी बॉल को ऊपर फेंकता है, तो कैप्टन उसे जंप करके अपने प्लेयर्स की तरफ ये करना, जैसे फुटबॉल में भी करते हैं, तो सेंटर पॉइंट से नो प्लेयर कैन हैव पोजीशन द बॉल फॉर मोर देन 1 स्टेप, मतलब वो बॉल को लेके कैरी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि भाग नहीं सकते हैं रग्बी की बॉल को, वो पास करना पड़ेगा उनको दूसरे टीम को, तो ये जरूरी है कि उनको पास करना जरूरी है। सो अदर टीम के प्लेयर्स जो है, ये जब एयर में होता है या ग्राउंड में होता है तब वो स्टील कर सकते हैं। और ये बॉल अगर लाइन के दोनों साइड में चले जाते हैं, जैसे फुटबॉल या किसी में होता है, तो वो बॉल आउट हो जाता है, तो दूसरा टीम उसको फेंकते हैं, जैसे फुटबॉल में भी होता है, तो वो थ्रो करते हैं ये साइड लाइन से, फ्री थ्रो करते हैं। तो इसमें इसमें और ये कहते हैं कि जब बॉल जो है रग्बी की बॉल आप जब दूसरे ओपोनेंट की टीम के एंड टच डाउन कर देते हो उसके लाइन के ऊपर, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तो बताया गया कि ये रूल्स है। तो इस रूल का इंटरेस्टिंग क्या है इस गेम में, कि जो रेफरी है, रेफरी ने खाली पहले ही टीचर ने रूल बता दिया और बच्चों को बोल दिया कि आपको ही फॉलो करना है, तो मैं उसका रेफरी नहीं हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है व्हेन दे स्टार्ट प्लेइंग एवरीवन वांट्स टू विन, तो टच डाउन हुआ नहीं हुआ, जो फ्री लाइन के बाहर गया नहीं हुआ है, तो अपने पीछे लड़ते रहते हैं बोथ एंड। अगर देखेंगे तो टिपिकली बसेस में भी होता है, ये भी सिचुएशन होता रहता है, both teams and players tend to fight over each point and each foul, and वो सब पैशनेटली जस्टिफाई भी करते हैं कि सही है कि गलत है। तो जब एंड होगा गेम, तो टीचर जो सारे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि ये गेम जो है उन्होंने फेयरली खेला है कि नहीं खेला है। सो हियर व्हाट चिल्ड्रन गेट टू नो एट द एंड, कि अगर वो जबरदस्ती खेल रहे हैं गेम को, अगर वो जबरदस्ती जीतने की कोशिश करें, सो दे विल स्टार्ट लूजिंग रेस्पेक्ट। सो इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, ये जो पूरा विचार है, इसके थ्रू हम सिखा सकते हैं। सो सिमिलरली हम ये गिल्ली डंडा का हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, फिर हम क्लास, तो इस तरीके के हम जो करा रहे हैं, तो अभी हम ये कर सकते हैं कि हम एक कोई भी लेसन जो आपको लगता है कि आप में से कोई भी अगर ये करते हैं, जो लेसन आपको लगता है कि इसमें से कौन सा लेसन है जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, सोशल साइंस का ले लें या इंग्लिश का ले सकते हैं, हिंदी का ले सकते हैं, as a small exercise, and then कोई भी टीचर हो, इंग्लिश, हिंदी या सोशल साइंस के, we can actually take something as a which you think कि बहुत easily हम स्पोर्ट्स के ग्राउंड में करा सकते हैं। So anyone can actually contribute in this thing, so that आप में से कोई अगर कोई भी चैप्टर जो भी आपने क्लास पढ़ाया होगा या whatever, so we can actually take something as an example. Was it useful? I mean, just wanted to. Any point? किसी को कोई भी कुछ ये करे। चौहान सर, सूर्य आप हैं? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा रीजन वाइज? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अभी कर रहे हैं। तो हमें बता देंगे ना फिर, जैसे रीजन के कोऑर्डिनेटर्स। हाँ वही Shall we take up distribution पहले, सुजी? हाँ, कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है कुछ पे, पहले वो देख लेते हैं, because it's getting time also, ना, तो distribution करने तो ज़्यादा बेटर लगता है। Sujit sir, very good evening. Yes sir. I'm principal from JNU Udhampur. Yes sir. All what I could guess for to solve deliberations, meaning we have to select the chapter, a story, a poem, and then we have to go through the learning outcomes, and accordingly we have to select a game. Yes sir.
This is what we intend to do. Yes, that's right, sir. So the requirement is that for each and every chapter we'll have to we associate some key. Is सर it mandatory? एक्चुअली एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है. एज एन एग्जांपल किसी भी एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. Sir, जैसे it basically, sir, in languages when we discuss, because in the beginning you discuss all the 4 basic skills. Moreover, there is hardly any story, hardly any poem, hardly any lesson which is not having any value associated with it, because literature in itself highlights the values. आपने बिल्कुल सही बोला. इनफैक्ट वो मॉर्निंग में हमने यही बोला था कि जो लिटरेचर है, लिटरेचर इज ऑल अबाउट वैल्यूज. तो इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स का जो वैल्यू सिस्टम दिखाया. And स्पोर्ट्स की वैल्यू सिस्टम दिखाने के लिए आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिकॉज द वैल्यूज आर अराउंड ट्रस्ट, वैल्यूज आर अराउंड रेस्पेक्ट, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन. बहुत सारे वैल्यूज है जो लिटरेचर में हम जब किसी भी चीज को समराइज करते हैं, कुछ ना कुछ हर चैप्टर में कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम है. And the idea is that what is the kind of activity that we can do to actually get children to come out of that, to show that value system. जैसे मैं आपको ये जो blind ये वाला दिखाया, this kind of school करके, उसमें वो एक वैल्यू सिस्टम है. और वो हम गेम में भी बड़े आराम से कर पाए, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा एक टीम में एक बंदा को ब्लाइंड फोल्डेड है और दूसरा बच्चा वो है नॉर्मल है. So if we actually make them as a team, so हम उसमें equality सिखा रहे हैं, हम उसमें respect भी सिखा रहे हैं. It's also understanding कि सबके अपने strengths होते हैं. So one person has a strength of giving good instruction, the other person has a strength of understanding those instructions. So you are absolutely right कि literature is all about literature में physical activity है, उसके साथ value education भी है, दोनों चीजें इंटीग्रेट. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मैं हिंदी बेल्ट से बिलोंग करता हूँ. मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हिंदी मीडियम में सोशल साइंस पढ़ाया जाता है. तो ये प्लान जो है वो हिंदी में बनवा सकते हैं टीचर से. सर बहुत अच्छा आइडिया आपका. सर ये आइडिया बहुत अच्छा है. इनफैक्ट आप अगर चाहते हैं कि सोशल साइंस का जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसको हिंदी में डालें तो कोई दिक्कत नहीं. अभी जैसे हम बात कर रहे हैं सर, कभी हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और कभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ पाते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर कुछ एक्टिविटीज है इंग्लिश में भी हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज हिंदी में हो सकता है, और सेम एक्टिविटी को अगर आपको इंग्लिश या हिंदी में दोनों में करना है, वो दोनों चीज आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें. ओके, ठीक है. वो अच्छी बात है. मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट हम जब हिंदी टीचर के साथ काम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसको इंग्लिश में भी डाल दीजिए ताकि लोग. Thank you, sir. Thank you. Shall we come on to the distribution? हम मतलब और किसी का कोई पॉइंट है तो कर लेते हैं. अभी है 45 मतलब we have. अगर और किसी का कुछ है पॉइंट, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं. Good evening, sir. Yes, sir. Tyagarajan from JNV Giridih, principal. Yes, sir. And you are referring about the friendly mongoose lesson, in which there are only 3 characters. Only the newborn child, the mother, and the mongoose. Right, sir. How could it be played? Sir, that is what is creativity about, where you don't need to think only in terms of 3 characters. What we need to do is to build it in terms of game where there are multiple characters that don't need to be. See, the concept of trust needs to be taught. I mean, it is not really about 3 people. It can happen in a family of 100 also, where there is a mistrust, right? Yes. So this is so it is not really about 3 persons. You don't need to depict the mongoose and this thing, but the core thought behind it, where there is a certain because of lack of trust, something has happened. So misjudging may lead to killing or a wrong decision. Yeah, misunderstanding. It's about misunderstanding, right? It's about sometimes misjudging. Misjudging. It's about it's a misjudgment, right? So when you are looking at games, you need to look at it from that point of view.
So let us do one thing. We can actually ask people about what kind of game that we can actually have on this thing. What could have been a different ending, as an example, right? The friendly mongoose, could there be a different ending altogether? So what could have been a different ending? I mean, that's one this thing. I had read about a different ending where the mother actually comes inside and actually before the mongoose this thing, he actually sees that the mongoose was actually smiling and innocent and with a sad face, right? Because she reprimanded him, and then all of them, they actually then live happily this thing. So we can actually give some situations where the situations will change. I mean, that's yeah. So now this thing is that how do we create a game out of it? That is what is challenging and also an opportunity, that how do we, because it's a beautiful story where there are so there is someone who is supposed to be, and this is what happens also in real life. And the idea is that, so maybe, I mean, we maybe we can dramatize it also, no, sir? We can dramatize it. I mean, one dramatization that I had actually read was that the mother mother is not happy with the mongoose. Sir, these roles can be played by different rules. That is the students. Yeah. Mother, mongoose, snake. These three roles, it may take some little more time to learn things, but even we can teach it through dramatization. And there could be 3 different teams also, right? Or there could be 3 different jets, or there are 3 different characteristics. Yeah. So all the 3 things can be there, and then you can actually have team games. So maybe by tomorrow morning, I mean, this can become a good homework for everyone, so that all of us can think about what kind of game can we do for this particular thing. So tomorrow morning we can think about it. Yeah. Excuse me, sir. Yes, sir. This is DR Patil from JNV Surat, Pune region. Right, sir. My request is if you could provide us one model lesson plan for each class, that will facilitate us for imparting the training to the teachers also. Sir, actually, sir, the lesson plans are actually there online only. When you go, you will find some lesson plans actually when you click and see. No. On this integration of the sports with the languages, yes, as far as English is concerned. Say it is there, sir. When you go online, it is there. Fine. Okay, you can actually see them online. Sir, basically now what we have to do, we have to that is a collect concept. What is learning outcomes, then activities, values to be taught. That is description. Yeah. What is exactly to be done now? Okay, sir. Actually, multiple things. Sir, so there is a dual role, sir. Okay. One role that you are playing is of a. So one is like, this is a model lesson plan, right? This is a model lesson plan. I'm just showing it. Like it has a title, it has a picture, it has a clear learning outcome. So this is about electricity and circuit, right? So this is a clear this thing. It has learning outcome. It is a description. It has variation, coaching tips, and equipment. So these are the 5 headings, and this is linked with academics. It is also linked with sports. Okay, so this is an activity which has been done. Even the learning outcome has learning outcome for that particular chapter, physics. It also has learning outcome from sports, which is about developing cardiovascular endurance, because if you are running 400 meters, you are developing endurance. It also develops the teamwork and coordination because it's a relay race. Okay, so there is a learning outcome from all 3 point of view. So whenever you are thinking from lesson plan point of view, all these things need to be kept in mind. So that is what, when you are thinking from a subject point of view. So when you're looking English, Hindi, or this thing, so this is like model lesson plan, that this is how you need to do it. Now the second question, which Chauhan sir will talk to you, is basically about as a subject coordinator, because there's a role of a coordinator. You have to get teachers to create the content. The reason why we are doing it with you, so that you are sensitized and you have an inclination for thinking creatively and thinking creative content. You can guide them also.
and it is the teachers who will create the content. And if you are actually also thinking very creatively and innovatively and also applying your mind, then the quality of content will go up. And also you will also ensure that everyone complies and all the chapters get EA. So right after in the next 4 or 5 minutes, we are going to also see what are the how the allocation of the classes should be between all of you, and how we can actually work with the teachers to create the content. Shall we do that and then we can discuss more? No, sir. What to upload now? You tell me, sir. You are telling that you have to upload something there. We have Okay. to upload something. Sir, no, teachers, you are going to give us the topics. Yeah. So the teachers are for 22nd and 23rd. Yeah. And again from 27, 28, there are four regions who are going to work on the content. Okay. Okay. So we're going to have a hands-on workshop for them on 22nd, 23rd, and 27 and 28. Okay. So you have to coordinate with them to create the lesson plans. Okay. So the teachers sir, once again repeat it, because we are not. It was not audible due to some problem. हाँ सर एक्चुअली अगर तो कोई बात नहीं कर रहा तो म्यूट कर ले तो it will be easier जो बात नहीं करते हैं. Okay. So what I'm saying is सर एक्चुअली जो अभी से 22nd and 23rd को 4 regions and 27th and 28th को 4 other regions are going to have hands-on workshop, the teachers. Okay. So what we are saying is that between now and the next 10 days, you have a role to play. Basically, see if you are able to, let's say, create one lesson plan or whatever. So you get a hang of things. I mean, between all of us, even if you are doing together 1 or 2 lessons, so what is going to happen is that you understand the process of how it is to be done, because you have to get things done from them. So from that point of view, I said that if we can actually think and creatively think and create a lesson, then it's actually interesting. One from social science, one from Hindi, one from English. You can do that. Second piece of work is that you have to allocate responsibility to the teachers. So second, हम एक allocation responsibility को कर लेते हैं, then we can actually come back, sir. That will be better. Okay, sir. No problem. Okay. Yeah. Sir, एक allocation responsibility कर लेते हैं, so that we can actually, so that the cycle gets completed. Is my screen visible? No. No, sir. No, sir. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Let's take a social science, Sujit. Yeah, it's visible, sir. Okay. Sir is हाँ sir. हांडू मैडम आप हैं यहाँ पे? हांडू मैडम? हाँ मैं हूँ ना. अच्छा ठीक है मैडम. मैं मालाधिकारी मैडम भी है ना? नहीं, मुझे तो दिखी नहीं. अच्छा वो नहीं. Okay. अच्छा. Well, friends, we come to the distribution part. Let me just tell you, as Mr. Sujit was saying, the subject coordinators have a very pivotal role to play as far as this particular purpose of the object or purpose of the workshop is concerned, if we have to successfully complete it. Point number 1, that we have 2 things to be done. One is the allocation of the topics to the teachers, that who will make what. And the second is, when the distribution is done, 2 things are to be done. One is that the concepts or the learning objectives are to be verified, along with the learning outcomes which have already been made by either the CBSE or the NCERT. So we will have a resource book made available to you online. So please verify this topic wise for each chapter, that what are the learning objectives, the concepts involved, and the learning outcomes. So we'll do the verification of that in case if any suggestion is to be given. So what is the suggestion required for that? So this will finalize our learning objectives chapter wise. Number 2. Sir, I have got a meeting, sir. Meeting lo nanu. Number 2. Hello. We have to prepare the lesson plans.
up to the point of preparing the activities, because lesson plan is not complete in itself only because of activity. There are certain other aspects also, like assignment, assessment, and the projects to be attached with it. But yes, the lesson plans aspect as far as the activities are concerned, that has to be prepared. So how we are going to go about it? We have 3 classes, 6th, 7th, and 8th. And for social science, we have 3 areas. One is history, the other is geography, and the third is civics. The allotment of the chapters could be done to the regions, either area-wise, that means history, geography, and civics, or it could be done class-wise, that is, few regions could be given 6th class, some could be given 7th, and the other could be given 8th. And to complete the entire areas, that is history, geography, and civics. So, what would be your choice, or how do you think it will be better to distribute history? Subject wise sir दे दीजिए. Subject wise देने? अच्छा I ठीक है. think, sir, class wise would be better, I think. Class wise, because there are here what I can see, there are more geography people. If it is given subject wise, then there will be more pressure on history and economics. There's only one. No. Actually, ma'am, ये जो है ये subject coordinators हैं. They themselves are not going to work on it. It is the teachers who are going to work. You are going to be the coordinator. But they'll be supervising. They'll be supervising. They would be supervising. Of course, they would be supervising. So but the content would be prepared by the teachers. Like I was seeing when you had teaching. The way you had allocated for science, I think that way it will be better for social science also. That is what I'm saying. That is what I'm saying. That if it is to be done that way, I think we can do it. There are 33 lessons in totality for 6th, 7th, and 8th in history. There are 23 chapters in geography, and there are 28 chapters as far as civics is concerned. So that way, I do not know about the content part of it, that whether the load of geography would be more or whether the load of civics would be more, because number of chapters is 28. But according to the content part of it, whether the content of 23 chapters will be more than the content of 28 chapters, that is to be seen. Usko kaise distribute kare? So the content, history plus civics will be more than geography. History ke liye ma'am? History and civics together, put together. Yeah, both together. Okay. You have but to put it together. madam, if you will put history and civics, topic will be more than geography, na? Naturally. Near about 7-8 topics are in each subject. Then history and civics will be near about 13 or 14 topics. Geography will be remain only 7 or 8. History jo bahut hai sir. So history I'm seeing, you can see on the left, actually history is actually quite a bit. History has got 33 chapters in total. Yes. So and geography, region wise distribute geography almost 28 hai. Jabki geography bahut kam hai. Geography 23 है. Geography 23 है और civics में 28 है. हाँ तो history में बहुत ज्यादा है सर. हिस्ट्री में बहुत ज्यादा है. हाँ हिस्ट्री में ज्यादा है. इसका मतलब ये होगा कि मेजर चंक विल गो टू द हिस्ट्री. हाँ अब जो दो रीजन जिसमें प्रिंसिपल्स good evening sir. Good evening sir. Good evening. Yeah, this is Srinivasa from Andhra Pradesh. हाँ जी. Yeah, if you permit me, I would like to speak. Oh yes, you are free. Yep, sir. It is like this. In history, we have got 33 chapters, sir. And 3 classes. If we divide history for 3 regions, class-wise, again political civics also class-wise 3 regions. So we get 6. And remaining geography could be distributed 2 regions. 6th and half 7th. You mean to say 3 regions would concentrate on civics, 3 regions on civics, history, and 2 regions on geography? Yes. 2 regions on geography, sir. 2 regions on geography. Yes, since number of chapters and volume of content is less in geography. Volume of content is something, which I do not have an idea. Only I have got an idea. Though I'm a principal, I have been handling these classes. Okay. I know the content of geography is much less compared to history.
तो So मैम it ये is ठीक always रहेगा advised. फिर? हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जैसे चलें। इसके 61 चैप्टर्स बन रहे हैं दोनों के, हाँ हाँ और इसमें इकोनॉमिक्स किसमें है? 8th का इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो नहीं है मैम। नहीं है। आपने लिख ये तो हाँ ये तो प्रिंसिपल साहब हैं जो ये मतलब उनकी- सब्जेक्ट कन्वीनर उनकी है। expert- प्रिंसिपल उनकी सर का expert- सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। ओके ये 61 उनके- चैप्टर्स हो गए हमारे। हिस्ट्री सिविक्स के 6 रीजन को दे दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। हाँ, एंड तो ज्योग्राफी ये- के भी 11 पॉइंट कुछ आ रहा है चैप्टर पर रीजन, 2 रीजन। Okay, let's put it this way. History के लिए we require 3 regions. फॉर सिविक्स 3, फॉर हिस्ट्री 3 एंड हाँ। फॉर ज्योग्राफी 2 रीजन। भोपाल- सर हिस्ट्री भोपाल के गिरी साहब। Yes, sir. हाँ आपको तो हिस्ट्री दिया जाए एक रीजन। ठीक है सर। सर हैदराबाद को हिस्ट्री एक मिनट आ रहा हूँ मैं। भोपाल को आपको दे रहे हैं हम हिस्ट्री और आपको मिल जाएगी क्लास 6 हाँ ऐसे क्लास क्लासेस 6। ठीक है सर। यस सर। नंबर 2 हिस्ट्री के और कौन है आपके पास? हैदराबाद में श्रीनिवास राव साहब। Yes, जी। sir. आपका भी हिस्ट्री है। Yeah, Eight 7 दे or दीजिए। 8. हैदराबाद आपको भी दे देते हैं। और 8 आपको दे देते हैं क्लास 8। Yes, sir. Right, sir? Okay. Now we require one more region opting for history. somebody can volunteer, those who have a Anybody can good volunteer. इकोनॉमिक्स वाले तो शायद उसमें सिविक्स में भी चल जाएंगे। ज्योग्राफी में से आइए एक जने। We have got 4 people in geography. चंडीगढ़ गौतम साहब। चंडीगढ़ गौतम साहब। Are you there? के गौतम साहब। फिरोजपुर। सर देख लीजिए अपने बजट में ही देख के गौतम सर है सर। के गौतम साहब हैं। हाँ अनम्यूट। 7th हिस्ट्री दे दीजिए। के गौतम साहब आपको भी हिस्ट्री दे देते हैं। आपका हो गया Seven. चंडीगढ़। जी। चंडीगढ़ विल बी डूइंग 7th क्लास। राइट सर। अब आ गए हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 2 regions will be doing it and the chapters would be divided. पटना को दे दीजिए सर। ज्योग्राफी पटना कौन है? पटना मौसमीना सर। पटना रीजन। पटना रीजन। ओके ठीक है। दे दीजिए सर ज्योग्राफी भी। सर ये पटना में ज्योग्राफी- तीनों को ज्योग्राफी दे दीजिए ना, जयपुर लखनऊ पटना। No, 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 sir. No, 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 sir. वो सिविक्स भी कर रहा है। जयपुर- सिविक्स दोनों, तीनों को सिविक्स देना है, 2 को ज्योग्राफी देना है सर। जयपुर को भी 2 को ज्योग्राफी देना है दे दीजिए ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी या। हो गया एक, तो पटना रीजन हो गया जयपुर को दे दीजिए सर। और एक जयपुर। जयपुर को दे दीजिए सर। ओके तो अब आपके चैप्टर्स जो डिवाइड होंगे वो होंगे आपस में डिवाइडेड। तो इट विल बी पटना विल बी डूइंग 6th क्लास के 8 चैप्टर्स एंड 7th क्लास के 3 चैप्टर्स और 4 चैप्टर्स। राइट सर। ठीक है मैडम। तो बताइए मैडम 6th and 6th क्लास के 8 जी चैप्टर सर। और 7th क्लास के फर्स्ट 4 चैप्टर्स 1 to 4। ओके सर। ओके सर। राइट। जयपुर सर- रीजन। जयपुर रीजन। तो बता दीजिए सर, मुझे फिर से बता दीजिए, मैं टाइप कर रहा हूँ, लिख स्क्रीन देख के लीजिए बताइए। पटना रीजन ज्योग्राफी क्लास 6 के all the 8 chapters and class 7 के 1 to 4। क्लास 6 तो पूरा ही है ना सर? नहीं क्लास ना क्लास 6 के है 8। क्लास 6 8 चैप्टर 1 to 4 क्लास 7। सर क्लास 8 के 1 to 8 चैप्टर्स होंगे ना? क्लास 1 to 8 CGPA 7 के 1 to 4। ठीक है। एंड देन जयपुर will be class 7 will be 5 to 9। 5 9 सर। This is class 7 and class 8 1 to 6। 11 और 12। नहीं मैं सर क्लास 8 का पूरा ही कर रहे होंगे ना वो 1 to 6। पूरा क्लास 8 हो गया। अब मतलब 1 to 6 क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6 चैप्टर्स उसमें। नहीं वो ऐसा नहीं है ना सर, पूरा क्लास सर ये क्लास 4 का क्लास 7 का 5 से
क्लास 7 का 5 to 9. ओके और क्लास 8 के 6 चैप्टर्स. क्लास 8 थी तो हो गया सर. क्लास 6 के भी तो पूरा कर रहे हैं मतलब कि. You will have an idea ना how many chapters are there. नहीं नहीं सर मैं किसी में वो छोड़ दीजिए. इजी है वो देखने के लिए विजुअलाइज करने के लिए. ठीक हो गया. So geography has been completed. No, civics. History. अब रह गया civics. Civics we have got 28 and it has to be distributed amongst 3. आप क्लासेस दे दीजिए. तो एक क्लास दे दें. क्लास वाइज दे दीजिए, एक एक हो जाएगा. हाँ एक एक क्लास दे दीजिए. एक एक क्लास. और रीजन्स कौन कौन से बच गए अब? पुणे इन 6 दे दीजिए. पुणे को. पुणे. हाँ पुणे को 6 हो गया. हाँ शिलोंग है 7 दे दीजिए. क्लास 6. एंड लखनऊ है 8 दे दीजिए. और शिलोंग क्लास 7 एंड लखनऊ 8. एक ऊपर की कॉपी निकाल के दे दो और नीचे वाले पे भी साइन ले लो. Sir, nobody is participating from Pune, sir. Somebody has to participate. Nobody is there from Pune. सुनो. हाँ लेकिन वो I think सुजीत थोड़ा बात कर लीजिएगा. नहीं वो राजन सर है ना. राजन सर को. हाँ राजन सर से बात कर लीजिएगा. Somebody. हेलो. हाँ जी. सर ये एक सविता पाठक मैडम है, उनका नाम था उसमें सर्कुलर में हमारे पुणे रीजन के. अच्छा अभी ठीक है. शी इज द प्रिंसिपल फ्रॉम द्वारका. ओके. सविता पाठक मैडम. Anyway, we can inform the headquarters about it. अच्छा सर, अब आप देखिए सर, आपको करना क्या है इसमें. आपको जो चैप्टर्स अलॉट करे गए हैं, आपने अपने टीचर्स, जो टीचर्स आपके रीजन्स के हैं, उनको आपने एक एक टॉपिक जो अलॉट करना है. एंड देयर कुड बी रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स आल्सो, बिकॉज द नंबर ऑफ टीचर्स वुड बी मोर and the number of topics is less. So there could be repetition depending upon how many concepts or how big the chapter is. Number one. So this allotment of chapters would be done by you. The second part, which is another important part, is that every teacher would also be making another lesson plan of their own choice, irrespective of the subject. That means even if your region has been allocated, say, history, so history would compulsorily be distributed amongst the teachers of your region, whose names have already come to us. But along with this particular topic which has been allocated by you, the teacher has the freedom of making another lesson plan, another activity of his own choice, irrespective of the area and irrespective of the class. I hope I'm clear on this. Class and subject also of the same subject. Class and subject also his choice. Let it be his choice, because we want to give them the freedom that if they want to express something or do something creative, which they feel that they can really do something in some area, let them do it. But area will be limited in a social science only, sir. History, geography, or civics. Yes, that is of course there. It is social science. When we are talking about social science, it is limited to social science. We cannot make it in mathematics. Okay. So I think this should be very clear. So we would be forwarding you the list along with the format of the teachers of your region. Your task would be to make 2 more columns. One column, the choice of the teacher, the topic he has taken up, and the class. The second would be the allotment of the topic made by you as per your allotment of subject and class. Any doubts? You repeat, sir, please. I'll repeat again. You will be getting the list of the teachers. Either you must be having it already from your regions. If not, then we will be forwarding it to you. That list will have the names of the teachers of the subject of your region who have been nominated by the headquarters. In that list, what you have to do is, against each teacher, you have to allocate the topic of the subject which has been allocated to your region now. This is number one, this allocation of the topic, which can be done to more than one teacher, because the number of lessons may be less and the number of teachers may be more. So depending upon the size of the chapter or the difficulty level of the chapter, you may give more than
one teacher, the same lesson. So that repetition can be there. In the second column, the teacher has to be asked that what is your choice of the topic, the subject, and the class which you want to make on your own. So we have two things: allocation of the topics as per the topic allocated to your region, number one, and second is the choice of the teacher irrespective of the class and the area of the subject. That is, it could be either from history, geography, or civics. Any doubts? No, sure. So Sir, this good is evening. Yes, sir. Pardon? Good afternoon, sir. सर हाँ बोलिए. मैं सविता पाठक बोल रही हूँ सर. मैं हाँ अभी मैडम. सुन नहीं पा रही थी. हाँ जी सर मैडम. एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि टीचर्स की लिस्ट सर कहाँ मिलेगी. एक्चुअली मैं छुट्टी पे हूँ सर, ईएल पे हूँ. अच्छा, आपको लिस्ट हम भेज देंगे मैडम. आप अपना जो है डिटेल्स जो हैं, जो भी आपके डिटेल्स हैं, जैसे आपका स्कूल कौन सा है, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, वो थोड़ा सा आप अपने उनके थ्रू भेज दीजिएगा ऑफिशियली. एक कॉपी इनको कर दीजिएगा सुजीत जी को. ठीक है, वो आपको हम भेज देंगे यहाँ से. वैसे आपके रीजन से भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके रीजनल ऑफिस से ही आपके हेडक्वार्टर्स में गए हैं नाम, और वहां से हमारे पास आ रहे हैं. एक्चुअली क्या सर, मैं छुट्टी पे हूँ, इसलिए मैं बोली कि मिल जाएंगे. घर पे हूँ तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी जितने भी टीचर हैं, और उनको टॉपिक भी अलॉट कर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको बता देंगे. आप थोड़ा अपना एड्रेस वगैरह वो कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा. जी सर. जी ठीक है. जी सर. हाँ, एक और कोई डाउट? सुजीत सर, एक कंफ्यूजन आ गया है. सर बोलिए बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ सर, इट्स राज सिंह फ्रॉम नैनीताल. इन साइंस ग्रुप एक्चुअली वी आर हैविंग 10 टीचर्स रजिस्टर्ड फॉर दिस. 10 टीचर्स. हाँ, 10 टीचर्स, yes. And we are given biology of 7th class, which is having 9 chapters and 26 concepts. No problem. You divide it as per the chapters. आप chapters wise divide कर दीजिए. Let the teacher decide on the concepts. But there are 26 concepts therein. No problem. Let him choose the best and the most difficult one. Let him be given that freedom. So all the 26 will not be covered, sir. In that situation, up to 20 can be covered, not the all 26, because one is given by us, the another one is chosen by the teacher. So in that case, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं. राज सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जवान सर का जो कहना था, मैं आपको थोड़ा सा पर्पस बताता हूँ. आप उसको लकीर की उसकी तरह मत देखिए. इसलिए हम कह रहे हैं कि हर चैप्टर जो है ना, हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर उसमें कवर्ड हो. ठीक है, इसीलिए सर ने बोला कि हर चैप्टर शुड बी कवर्ड. और जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. वो कोई टीचर चाहिए तो 3 भी कर सकता है. कुछ आप देखेंगे कुछ टीचर काफी क्रिएटिव होते हैं, वो 3, 4, 5 भी कर लेते हैं. ऐसे जरूरी नहीं कि 1 करना है या 2 करना है. सर ने इसीलिए बोला कि देखिए क्या होता है, टीचर को हमेशा मन करता है कि मैं अपने मन का कर लूँ, तो उसको वो चॉइस दे दी है. दूसरा, हमने कंप्लायंस के पॉइंट से हमें सबको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तो उसको असाइन कर रहे हैं. तो इसीलिए, बट अदरवाइज वो अगर मन करे उसको ज्यादा करना हो तो कर सकता है. अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया तो छूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. और 100% कॉन्सेप्ट होना जरूरी नहीं है. 26 के 26 हम स्पोर्ट्स के थ्रू करेंगे, जरूरी नहीं है. ये आप ये सोचिएगा कि इट इज एन इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन अप, एंड इफ द टीचर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स of preparing the activities as per the guidelines of NEP for integration of the sports with the subjects. I think if they are able to do one, they'll be able to do many others. So let us not go for 100% achievement of all the concepts and all of this thing. If from every chapter we are able to prepare an activity, I think that will be good enough, and that will ignite the spark which is actually required for preparation of this. Excuse me, sir. मैं डॉक्टर A.K. गिरी, वाइस प्रिंसिपल देवास. हाँ बोलिए सर. जो हमारे साथ में टीचर काम करेंगे उनको अलग से एक बार ओरिएंटेशन देना होगा आपको ना? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं. ये हमारा इसीलिए आप जितने जल्दी हमारे को टॉपिक्स के बारे में बता देंगे, उतनी जल्दी आप लोगों का ओरिएंटेशन का, उन टीचर्स को थोड़ा सा ओरिएंटेशन कर देंगे. तो पहले टॉपिक हम सेलेक्ट करके टीचर्स को दे दें. बिल्कुल, आप टीचर से वो आपकी मर्जी है कि आप उनसे पूछ करके कर रहे हैं या आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको जो है मिल जाएगा कि कौन टीचर कौन क्लास को पढ़ा रहा है. अच्छा, लिस्ट आज मिल जाएगी? हाल मिल जाएगी. Okay, thank you, sir. Yeah, I have a point to bring to your notice, sir. Please. Instead of giving or assigning a topic to the teacher,
and giving training to them in the later part. Why can't we offer training to them before that and ask them to choose their choice and allocate from our side? We have given you this freedom. The how allocation is to be done by you. Yeah, I understand. It can be done by the choice of the teacher. We are not working with all the teachers of the region, and we don't know what is about their capacity. Exactly, sir. Sir, the nomination has been done by the regional office after consultation. Maybe they have taken into consideration. Yeah, this the is merit of not the teacher. known to the teachers. Principal, to me also. If I am the coordinator, I have to have some idea. I am not aware of it. Yes. Yeah, let me understand. And otherwise, my suggestion, if we give training to them in advance and ask them to prepare topics as per our guidance or our choice, their choice, that could be better, I believe. Sir, we have already considered that. That is why we are saying that there are two lessons which they have to prepare. One is as per their choice and the other is as per the allotment. Sir. Right. So choice would be that they can pick up any topic from any class of any area. Supposing you have been allocated history and a teacher of your region is also interested to prepare one in geography. Yeah, so I understand, sir. The basic point is they have to have an idea what they are supposed to do. Sir, this is what I am saying. After you do this allotment, we are going to have some kind of interaction with you along with your teachers also. Oh, that's okay. I understand. Right. So that they are able to understand that how it is to be done and how the things are to proceed. You have been given an orientation. You have a fairly good idea now. I could not attend in the morning session because of login issues. No problem. You can join tomorrow also. Yeah, I will join. So you will get that fairly good idea. And thereafter, after you decide about this particular chapters and the allocation and everything, then at least one day we will have in between where the teachers along with you will be given this orientation. So you can also explain to them and they will be in touch with us also. Okay, sir. Yeah, that's okay, sir. Thank you. I think that's fine. Okay. Yeah, it's clear, sir. Is it done now? I think the social science was complete हो गया. हो गया तो अब है ना? इसके बाद कल 12 कल करते हैं. सुजीत अभी इंग्लिश का है ना सर? हाँ, सुजीत इंग्लिश का और हिंदी का थोड़ा सा चैप्टर्स में हमारे को एक बार देखना पड़ेगा कि कितने नंबर्स हैं इनके ना. तो या तो इसको कल सुबह कर लें. सर इसको क्लास वाइज कर दीजिए प्लीज. हैं? क्लास सर क्लास वाइज कर दीजिए. क्लास वाइज कर दें. चलो ये भी अच्छा है. सर क्लास वाइज कर दीजिए. सर क्लास वाइज कर दीजिए और इनमें दो बुक्स रहेगी. एक रहेगी सप्लीमेंट्री बुक और दूसरी रहेगी टेक्स्ट बुक. तो हमारे पास जैसे टोटल 8 रीजन है तो एक रीजन को हम 6 की सप्लीमेंट्री बुक दे देते हैं और दूसरे को टेक्स्ट बुक दे देते हैं. तो इस तरह से हमारे अप्रोक्सीमेटली 6 रीजन कवर हो जाएंगे इसमें. यस सर. और जो 2 रीजन हमारे रह जाएंगे. अच्छा, आप मुझे बता दीजिए इसमें इंग्लिश में जो है आपके 6th क्लास 3 रीजन को दे दें क्या 2 रीजन को देना है? सर 6th क्लास में 2 किताबें रहेंगी ना. देयर आर 2. सर आप बताइए. So there are two books in 6th class. One is the textbook, the second one is the supplementary book. तो हम एक रीजन को 6th क्लास की टेक्स्ट बुक दे देते हैं और दूसरे रीजन को सप्लीमेंट्री बुक दे देते हैं. उसी तरह से 7th क्लास में भी हमारी 2 बुक्स रहेंगी. एक रीजन को हम फिर टेक्स्ट बुक दे देंगे, दूसरे रीजन को हम सप्लीमेंट्री बुक दे देंगे. सर एक्सक्यूज मी, पोर्टल पर केवल एक ही बुक तो अवेलेबल है? नहीं सर, ऐसे है कि देखिए 2 किताबें हमारी रहेंगी. जैसे 6th क्लास में हम चले जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हनीसकल है और एक है पैक्ट विद द सन. तो हम एक रीजन को एक दे देते हैं, दूसरे रीजन को दूसरे दे देते हैं. तो इस तरह से हमारी 3 जो क्लासेस हैं उससे 6 रीजन हमारे आराम से कवर हो जाएंगे और हम आगे टीचर्स को भी बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. अब हमारे पास रह गए 2 रीजन. तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगी. एक ऑप्शन तो है कि अगर हम चाहें तो स्पोर्ट्स को कंपोजिशन में किस तरह से इंटीग्रेट करना है एक रीजन को दे सकते हैं. उसी तरह से ग्रामर में किस तरह से कर सकते हैं. किस तरह से ग्रामर की जो एक्टिविटीज हैं उनको स्पोर्ट्स में किसी एक रीजन को दे देते हैं. तो उससे हमारे 8 के 8 रीजन कवर हो जाएंगे. बाकी दिस इज अ सजेशन, एक सजेशन है.
लेकिन जैसे अगर आपको बेटर लगे आप करिए ऐसा। सर ग्रामर और जो ये स्पीकिंग स्किल्स है सर, ये तो कम्प्लीटली स्पोर्ट्स बेस्ड हो सकती है सर। एब्सोल्युटली, क्योंकि सर जब हम बात इंटीग्रेशन की करेंगे तो कमेंट्री आ जाएगी, कमेंट्री के बाद नोटिस राइटिंग आ जाएंगी, रिपोर्ट राइटिंग आ जाएंगी, तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन हमारी है जो कि 6th क्लास से हम लोग शुरू नहीं करते हैं। तो दिस इज सजेशन फ्रॉम माय साइड सर। बाकी महिपाल सर आपको जैसे बेटर लगता है। नहीं डेफिनेटली आप लैंग्वेजेस के इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है टेकिंग योर दिस थिंग, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग लैंग्वेजेस फॉर टुडे लेट्स डू इट टुमारो। आप इसका एक बना दीजिए सर कि व्हाट वी वांट बेसिकली इज दैट एवरी टीचर जो यहाँ पे है ही वुड बी अ रिसोर्स पर्सन एट अ लेटर स्टेज। हाँ सर, उससे बन जाएगा, बन जाएगा। he must get an exposure of preparing the activities जो कि हम integrated approach से चल रहे हैं, and at the same time the topic should be covered also. सर ये आइडिया सर का बहुत अच्छा है। सर ये आइडिया उनका अच्छा है कि हम जो करें ना मतलब टेक्स्ट बुक और ये जो सप्लीमेंट्री बुक है दोनों को करके, और बाकी जो है एक वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं और उसकी कर रहे हैं, ग्रामर की बात कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था कि सप्लीमेंट्री रीडिंग की जो बुक है आप उसको कोर्स कवरेज में कितना कराते हैं? 100% पूरा पूरी बुक है सर वो, and it is cover it fully. And then it is evaluated also. It is yes sir, it is evaluated. Sir almost 10 chapters होते हैं सर हर इसमें almost लगभग. It is evaluated for even supplementary and textbook has got 10 chapters each book. Yes sir. तो इसमें फिर ऐसे half the chapters of textbook and half the chapter of supplementary can be given to one region of a class, and half this thing and half of can be given to the other region, so that it is equally both the textbooks as well as this thing are distributed properly. Yes sir. सर 7th क्लास का दे दो सर पुणे रीजन के लिए 7th क्लास। ये आप देखिए कि इसमें हम 8th class sir 8th class can be given to Hyderabad. सर शिलोंग रीजन को 6th क्लास सर वो जो जैसे बता रहे हैं ना पूरा टेक्स्ट बुक और पूरा वो दे दीजिए, वो एक कंटिन्यूटी में होता रहेगा, वो दो बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, इजी रहेगा सर। फिर 2 रीजन जो बचेंगे उनको ग्रामर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और कंपोजिशन जो राइटिंग सेक्शन देना है और एक ग्रामर देना है सर। अच्छा है वो, एक को कंपोजिशन देना है, दूसरे को ग्रामर देना है। हाँ तो चलिए ग्रामर दे ग्रामेटिकल आइटम्स स्टार्ट करो। 6th क्लास का one region has to be given text book and the other region supplementary reading. Which region is going to be 7th class textbook sir? Shillong region supplementary class 6 sir. Class 6 supplementary for Shillong. Shillong yes sir. Sir class 8 Hyderabad region sir, class 8. Class 8 Hyderabad region what? Textbook or supplementary? Yes sir. Supplementary reader. Supplementary reader. Supplementary. और चंडीगढ़ को Hyderabad you said ना? पुणे region 7th class textbook. Hold on one by one. चंडीगढ़ को आप लिख लीजिए मेरे ख्याल में यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ सर। सर लखनऊ रीजन को पुणे रीजन 7th क्लास टेक्स्टबुक। सर लखनऊ रीजन पुणे। सर शिलोंग रीजन क्लास 6 सप्लीमेंट्री। सर शिलोंग रीजन लखनऊ क्या है क्लास 7? लखनऊ रीजन क्लास 7 सर सप्लीमेंट्री। और शिलोंग रीजन ये 8th टेक्स्ट। शिलोंग बताइए। शिलोंग सर क्लास 6 सप्लीमेंट्री। सर हैदराबाद रीजन क्लास 8 सप्लीमेंट्री। हैदराबाद क्लास 8 सप्लीमेंट्री। चंडीगढ़ क्लास 8 टेक्स्ट बुक। सर भोपाल रीजन फॉर ग्रामर एंड कंपोजिशन। भोपाल ग्रामर एंड कंपोजिशन ग्रामर। सर पटना रीजन जयपुर ग्रामर एंड कंपोजिशन किसका था? भोपाल रीजन। भोपाल रीजन। And this will be for all the classes? Patna region class 6 textbook. Patna region class 6 textbook. Okay. सर जयपुर क्लास 7। जयपुर क्लास 7 हो गया। जयपुर क्लास 7 कंप्लीट बोथ हो चुका है सर। हो गया।
जयपुर को भी ग्रामर एंड कंपोजिशन दे दो। पुणे में एक्चुअली दो लोग हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। जयपुर will both of us work together, sir? जयपुर को क्या मिला है? Pune region, both of us will work together. Okay. So it will be better we'll work together. सर स्पीकिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऐड करवा दीजिए ना सर, अच्छा रहेगा जयपुर को। वो भी जरा ASL में आने लग गया ना आजकल। जयपुर हो गया सर, सारे हो गए। हाँ मोतीराम भी सर ये हिंदी में भी सेम चीज कर लीजिए ना, इजी रहेगा। हिंदी में listening and speaking skills is Jaipur. Hindi also do the same thing, it's easier to track actually. अच्छा, जो ग्रामर एंड कंपोजिशन करेंगे भोपाल, इट विल बी डन फॉर ऑल द 3 क्लासेस। आपको देख के बता रही ऑल क्लासेस बता रही। Similarly, listening and speaking skills, Jaipur region will do it for all the 3 classes. Yes sir. सर सेम चीज वो कर लेते हैं हिंदी के लिए। हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का कंपोजिशन क्या है, इनके पास भी सप्लीमेंट्री रीडिंग है या कुछ और है? हिंदी में है कोई? हाँ हिंदी के होंगे ना। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक सजेशन है कि हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स A कोर्स B। अच्छा ना, कुछ रीजन्स में जहाँ पर सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वहाँ पर कोर्स B चलता है सर। अच्छा, ये बताएंगे आपकी कोर्स B कहाँ चलता है? कोर्स B देखिए सर, चलता मिक्स क्या है कि जैसे हमारा सर हैदराबाद रीजन में चलता है, हैदराबाद रीजन में तो क्लास 9th में होता है। हाँ नहीं सर, इसमें भी चल रहा है। पंजाब में कोर्स B चल रहा है सर। नहीं, इफ वी कैन आइडेंटिफाई द रीजंस जहाँ पे कहाँ रखेंगे, we would be able to allocate the areas to them only. सर हैदराबाद रीजन, शिलांग रीजन, शिलांग, हैदराबाद रीजन, अरे ते लिस्ट आलेली आहे ना त्यांची, and शिलांग and पुणे रीजन। मग तेवढे टीचर घ्यावं लागेल ना। हैदराबाद, शिलांग and पुणे त्यांना सांगून आपण ते वर्क देतील आणि ते रिजनला डिस्ट्रीब्यूट करतील पुस्तक आपले तो प्लान आपल्याला देऊन। यही हो गया ना, हैदराबाद, शिलांग एंड पुणे कोर्स B। जी सर, सम पार्ट ऑफ चंडीगढ़ रीजन, शायद पंजाब में कोर्स B चल रहा है सर। पार्ट ऑफ दिस थिंग, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई थिंक दीज 3 रीजन्स कैन बी गिवन कोर्स B। क्लास 6 किसको दें हैदराबाद में से? हैदराबाद व्हिच सर रुपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ हैदराबाद रीजन B कोर्स दीजिए सर। कोर्स B, ओके, फॉर क्लास 6 7th क्लास दीजिए सर। हैं 7th क्लास, ओके 7th क्लास। एंड शिलांग रीजन, शिलांग में प्रदीप कुमार जी 6th क्लास दे दो सर, 6th क्लास सर, क्लास 6, ओके। हाँ जी। और उसके बाद है पुणे को 8th सर, पुणे रीजन क्लास 8। ठीक है, पुस्तक तो एक ही है सर, एक ही पुस्तक है, दुर्वा नाम की, दुर्वा भागवत। ये आता कैसे अटेंड कर ले है ना, कोर्स B हिंदी हैज बीन। हेलो नाउ वी आर लो क्या था, काय कर 5 regions मिलियो होता and we have got 3 classes, 6th, 7th and 8th। कोर्स A है सर प्लीज। हाँ कोर्स A में साहब बताइए सर प्लीज। हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर प्लीज पुणे रीजन से बोल रहा हूँ मैं, केसर सिंह, TGT हिंदी, JNV दाहोद 1 से। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि पुणे रीजन में जैसे मेरी स्कूल है JNV दाहोद 1 गुजरात में, वहाँ पे हम लोग सर एक कोर्स चलाए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैक्सिमम स्कूल्स में तो कोर्स चल रहा है ना। बी कोर्स का हम लोग कैसे तैयार कर पाएंगे? जब सपोज दैट मुझे अगर कोई लेसन मिलता है बाकी रीजन्स भी बनाएंगे, वो आपको भी तो मिलेगा। अभी तो ये तैयारी करने की बात है। बी कोर्स की बुक्स ही हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी सर। अच्छा, आपके पास बी कोर्स का नहीं रहेगा? हाँ, बी कोर्स अवेलेबल है ही नहीं, स्कूल में ए कोर्स ही चला रहे हैं सर हम लोग। पुणे रीजन सर कोर्स आपके पुणे रीजन में कितने स्कूल है जिनके पास की बी कोर्स है या ए कोर्स है? नहीं, ए चलता है सब जगह, हैं? सब जगह ए चलता है, ए। ये तो आइडिया नहीं है सर मुझे,
लेकिन मेरे स्कूल में बहुत बार क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास आते हैं, तो बी कोर्स के आ जाते हैं, जबकि हम लोग उनको चेंज करवा के ए कोर्स का करवाते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए ना, बी कोर्स चलता है सर, बहुत सारे स्कूलों में बी कोर्स भी है। बी कोर्स चलता है ना, तो ठीक है, आप बी कोर्स कराइए। ए कोर्स, बी कोर्स का आप किताब तो आप इसको इसमें मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की है, यू कैन ऑलवेज प्रोक्योर देम। हाँ सर, दूरवा भाग, यस सर, दूरवा है सर, पुस्तक का नाम दूरवा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 सर। सर इसका लेसन प्लान भी तैयार किया था, तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी लेसन प्लान के लिए। ये ई कंटेंट भी तैयार किया था, तो उसमें भी प्रॉब्लम आई थी सर बी कोर्स के लिए। देखिए, सिर्फ अगर आपका अकेले का स्कूल है, ठीक है, हाँ जी और सर। आप प्रिंसिपल हैं वहाँ पे? नहीं सर, मैं टीजीटी हिंदी हूँ वहाँ पे सर। आपके लिए तो ये था ही नहीं अभी, आपके लिए तो बाद में था ये। अच्छा, प्रिंसिपल मैडम ने बोला था कि आपको ज्वाइन होना है, इसलिए ज्वाइन हुआ सर मैं। नहीं, आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन वो ये बेसिकली उन्हीं के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा काम का। तो आपका देख लेंगे, अगर जो आपके स्कूल का एक वर्ष का होगा तो आपका वो दैट इज योर इंटरनल मैटर। आपके रीजनल कोऑर्डिनेटर है, ही विल बी एबल टू एडजस्ट, और जो आपके सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके, लेट अस कम टू कोर्स ए नाउ। कोर्स ए, आप बताइए 6th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 17 चैप्टर है सर 6th क्लास में। कितने? 17। ये टेक्स्ट बुक के हैं? यस सर। और सप्लीमेंट्री? और सप्लीमेंट्री एक ही पुस्तक है सर, रामायण नाम से है, कंप्लीट बुक है रामायण। उसके ऊपर कुछ करना है या सिर्फ इट इज सप्लीमेंट्री फॉर रीडिंग पर्पस? नहीं, रीडिंग पर्पस उसमें एग्जाम में भी आता है सर। चलो ठीक, नहीं आता है ना? आता है सर, आता है जी। अच्छा, और 7th में कितनी किताबें हैं? 7th में 20 चैप्टर्स हैं और एक पूरक पुस्तक है सर, महाभारत। ओके। और 8th क्लास में 18 चैप्टर हैं और साथ में पूरक पुस्तक है भारत एक खोज। ठीक है सर। ठीक है, तो नाउ वी हैव गॉट 5 रीजंस लेफ्ट। पहले टेक्स्ट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले टेक्स्ट बुक दे दीजिए सर, महाभारत, रामायण और भारत एक खोज, ये 2 हैं। क्या चीज? पहले 3 रीजन और टेक्स्ट बुक, और एक में रामायण महाभारत इकट्ठी हो जाएगी और एक में भारत एक खोज अकेली रह सकती है। अच्छा ठीक है, आप बताइए 6th क्लास के लिए टेक्स्ट बुक कौन देंगे? रीजन कोर्स से भोपाल रीजन क्या लेंगे? द्विवेदी साहब, देखिए द्विवेदी जी, हेलो द्विवेदी साहब हैं? नहीं है? चंडीगढ़ है सर, द्विवेदी जी है। हाँ, द्विवेदी जी है। द्विवेदी जी थोड़ा सा अपना माइक को अनम्यूट करिए। वो माइक सर, अब माइक नहीं चल रहा है उनका। अच्छा, माइक नहीं चल रहा है, तो हाउ डू वी कम्युनिकेट टू हिम? इनको फिर ऐसे करते हैं, इनको कोर्स 6th क्लास दे दीजिए। वो है ऑलरेडी। हाँ, मैं क्लास 6, अगर कुछ लिखना हो तो चैट से कंफर्म कर ले। हाँ, टेक्स्ट बुक दे दीजिए द्विवेदी जी। अरे कुछ तो बोलो भाई। 17 चैप्टर से उनका क्लास 6 मिल रहा है। उनका माइक नहीं है दीजिएगा सर, इसमें, माइक ऑन नहीं है सर। सुजीत जी इसमें टेक्स्ट बुक कर दीजिएगा, क्लास 6 टेक्स्ट बुक, क्लास 6 सप्लीमेंट्री भी है टेक्स्ट ना बुक। ओके, नाउ चंडीगढ़। सर 7th दे दीजिए टेक्स्ट बुक। है जी, 7th टेक्स्ट बुक दे दीजिए। ओके, क्लास 7 टेक्स्ट बुक, ये हो गया चंडीगढ़। राइट, देन वी कम टू जयपुर। प्रदीप मिश्रा जी, मिश्रा साहब हैं आप अवेलेबल? प्रदीप मिश्रा साहब नहीं है सर। नहीं है? No. अच्छा, he is not there. तो जयपुर कैन बी गिवन क्लास 8, या और कोई है इसमें? लखनऊ के रूपचंद जी? हाँ, दे दीजिए सर, 8 दे दीजिए, कोई इशू नहीं। 8 आपको दे दें टेक्स्ट बुक? हाँ, तो लखनऊ को दे दीजिए। लखनऊ। अच्छा, अब आगे हम लोग इसमें सप्लीमेंट्री 2 रीजन्स रह गए मेरे ख्याल में। एक रह गया पटना। पटना क्या लेंगे आप? महाभारत एंड रामायण एक साथ ले लेंगे?
पटना SB मिश्रा जी, दीवान, Mahabharata and Ramayana. And which is the region left now? Jaipur. Jaipur. It can be given Bharat Ek Khoj. I think that's the distribution done. सर मैं JNB अहमदाबाद से प्रिंसिपल RK दीक्षित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए दीक्षित साहब। ये पुणे रीजन में सब जगह कोर्स A चलता है और जो 10 टीचर हमें अलॉट किए गए वो सब कोर्स A पढ़ाते हैं। तो हमें तो यही बताया गया कि पुणे में सारे के सारे बोला वो हैं तभी तो ये बात आई यहाँ पे। नहीं मैं बोल रहा था, उस समय भी बोल रहा था। तो यस सर, मैं भी वही बात कह रहा था सर। आप लोगों को somebody had given the feeling feedback to us कि that पुणे में जो है सभी जगह वो कोर्स भी है। ऐसा मेरे हिसाब से वो चंडीगढ़ का बोल रहे थे। मैं आई कुड हियर चंडीगढ़ में कुछ जगह पे चल रहे करके। चंडीगढ़ की मैडम ने तो खुद ही अभी ऑप्ट किया उसके लिए क्लास 7th के कोर्स A के लिए। बट कोर्स भी होता है चंडीगढ़ में, दैट इज व्हाट समवन वाज सेइंग। अभी कोई बता रहे थे, मैं जब मेरे को जहाँ तक सुनाई दिया। तो फिर ऐसे कर देते हैं, कोर्स B जो है सिर्फ 2 ही रीजन्स को देते हैं। जब टीचर्स उसमें नहीं है तो 2 ही रीजन्स को बांट दीजिए आपस में। चंडीगढ़ में एक बार कंफर्म कर लीजिए, स्वाप कर चंडीगढ़ मैडम। सर फिर इसको डिवाइड करके दे दीजिए, A और B दोनों दे दीजिए, जो भी चाहेंगे कोई बात नहीं। आप करा लेंगे दोनों? सर हाफ जैसे बुक्स है ना तो उनको डिवाइड कर दीजिए चैप्टर वाइज। नहीं ये बता रहे हैं कि कोर्स B में सिर्फ एक ही किताब है। नहीं सर, एक कोर्स तो फिर है ही ना हमारे पास, 7th का वो पूरा हो गया ना सर। हाँ। और अगर B देना है तो B को डिवाइड करके दे दीजिए। मैम वो क्या वो 7 उनको देके आपको 8 दे सकते हैं? या ऐसा कीजिए सर, जैसे 7th का A कोर्स है तो 7th का B कोर्स भी हमें दे दीजिए, कर लेंगे। अच्छा दोनों दे देना आपको? हाँ जी 7th A। ठीक है तो दोनों दे दीजिए। क्या चंडीगढ़ गिवन कोर्स B also along with 7th का टेक्स्ट बुक। तो फिर ये पुणे से ही हटा देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। हाँ पुणे से हटा दीजिए। इसमें कोर्स भी देख लीजिए, सभी के लिए हो गया। 6 का कोर्स B एक तो दे दिया शिलोंग को, अब ये इनको दे दिया हैदराबाद को। उनको कोर्स A का कुछ दे दीजिए। क्लास 8 हो गया और क्लास 7 पुणे, ठीक है बस हो गया। हाँ इन कोर्स A इनको दे दीजिए, फिर चंडीगढ़ से हटा करके इन्हीं को दे दीजिए। सर चंडीगढ़ को हटा के मैं वही तो बोला था इसको। हाँ, चंडीगढ़ से हटा दीजिए। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कवर्ड हो जाएगा ना, सबके लिए इक्वल रहेगा फिर। ठीक है ठीक है सर। सर इंग्लिश वाले लेफ्ट कर सकते हैं सर? हैं जी इंग्लिश वाले लेफ्ट कर सकते हैं सर? इंग्लिश का वो अभी जा सकते हैं। अभी बस 2 मिनट में रैप अप करते हैं। अभी रैप अप ही कर रहे हैं, बस हो गया। सबके लिए कर रहे हैं रैप अप। ठीक है तो बेसिकली टुमारो विल मीट। हम जो इंग्लिश और हिंदी के लिए अभी वो कर देते हैं। अभी एक बार टाइम का बता तो कंफर्म कर देता हूँ आपको। हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो सर, सुरेश कुमार सर कल आपसे 2 बजे मिलेंगे इंग्लिश और 3 बजे हिंदी के लिए मिलेंगे। बाकी में तो क्या टॉपिक्स दिए हैं सर। एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट। हेलो सोशल साइंस का टाइम सर? सर सोशल साइंस का टाइम 12 बजे है सर। सोशल साइंस 12 o'clock सर। सर एक स्मॉल क्वेश्चन है सर। यस सर। सर बाकी लोग तो कंटेंट है वो दे देंगे टॉपिक से, टेक्स्ट बुक से, और कंपोजिशन में भी टॉपिक है। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग में डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग एंड स्पीकिंग तो हर क्लास के लिए करना पड़ेगा सर। एक ब्रॉडली बना दीजिए तो इसके लिए थोड़ा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगा। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने लर्निंग और ये तो आपको पूरे सारे क्लास के लिए करनी पड़ेगी आपको।
वो आपके साथ सर बैठना भी पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं सर, प्लानिंग कैसे करना है वो आपके साथ बैठना पड़ेगा सर सेपरेटली, क्योंकि ये तो हमने पहले सोचा नहीं था। आप ऐसे करिएगा, जयपुर से बोला ना, आप ऐसे करिएगा कि अपने बाकी जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके उसमें टोटल बाकी रीजन्स के, उनके साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। आप सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर सब लोग साथ में हैं। इट इज नॉट दिस कि जो आपको अलॉट करा गया है उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। ये NVS का टोटल प्रोजेक्ट है। यू आर डूइंग अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू हैव बीन गिवन एन एलोकेटेड एरिया, but it doesn't mean that you cannot take the help of other regions in discussion or in consulting them that how we should go about it. Again, so please feel free, to discuss amongst yourselves also on this. Sure. That what is to be done and how it is to be done, and then you can put forward the proposal. Right, sir? लेसन प्लान के बारे में हाँ जी, ठीक है, तो कल मिले। अभी तो और कुछ है सर? हाँ ठीक है, जी हो गया ना फिर बस का। Many people are. Yes sir. So sir, we will conclude today. हाँ ठीक है।